रोहित बोलता है yes. What is it, Rohit? Yes, no, maybe. Resistance of liquid thickness. Okay, fine. Let us look at the concept of what exactly is this viscosity in liquids. Okay. Now, we have seen liquids flow, right? Water flows, juice flows, then blood flows, then give me oil flows. Give me some other examples of liquids. Scent flows. Then you name the liquid and it flows. Lava is liquid, right? Lava flows, right? So if you pour a liquid on the floor, the liquid will flow. Simple as that. The liquid will flow. Acha. Now, is there a difference in their speeds? Just one question. Yes. Yes. Okay, there is a difference. So I'll give you an example. Water and oil. If I spill water and oil on a plain floor, which one of them will flow faster and which will flow slower? Water will Water will flow flow faster faster. Water will and flow oil faster and oil will flow slower. flow slower. Acha, acha. Good, very good. That is very practical of you guys that you know that this is going to happen. Maybe it's because of the it's because of Thickness. what is this because thickness of what? Oil. Thickness in oil. Okay, let's see. Okay, so let us see, why is the speed difference? Why is there a speed difference? Now what Rohit said, now there is something called as resistance to the flow. Do you know what is the meaning of this word resistance? Sorry. Let me take the name and ask. Okay. Uh, I will ask Devika Ravindran. Do you know the meaning of resistance, beta? I don't want in terms of electricity and all. I want general explanation of resistance. What you know? How will you explain resistance to me? Sir, it's a type of obstacle. Very good. It's a opposition force. Very good. So resistance is nothing but opposition force. Now similarly, when liquids are flowing now, liquids also face obstacle. Liquids also face a opposition force. Like we are walking and there is a opposing force on the ground which is there. What is that called, beta? Friction? Friction pata hai sabko, or are you listening to this word first time? I hope everybody knows what's friction, right? Yes, yes. Yes, friction. अगर friction नहीं होगा तो क्या होगा? हम लोग चलते ही रह जाएंगे, हम लोग फिसलते ही रह जाएंगे, right? If you fall, you will keep on rolling. If you walk, you will keep on walking. You will not be able to stop, right? So friction is necessary. Now this friction is also experienced by flowing liquids, not only from the surface on which they are flowing, but also internally between the layers of the liquids. Now liquids, they flow in the form of layers. Laminar flow बोलते हैं उसको हम लोग, ठीक है? अभी I think I asked you this last class. I'll again ask. I just want to make this concept clear. In a river, as I hope everybody has visited a river once or at least once in their lifetime. Yes. Achha. Yes. If you have not visited a river, you must have seen flowing water at least somewhere or the other. Okay? Achha. Why am I taking the example of river is because river has flowing water. And that is the best example because we are learning about fluidity. We are learning about the properties of fluids, properties of liquids. So abhi, when I put my hand inside the river upar se I can see the water is flowing, right? Upar se the water is flowing. But as I put my hand inside the water, my hand all of a sudden goes ahead, apne aap. Matlab, I don't push my hand, but something is pushing my hand and is taking me ahead.
Why is it? Because it is because of the ghost present inside the river, because of which people Flow of water. It's because of the flow of water. It's because of the speed of water. So when I was in 11th standard, I thought that this is happening because if I put my hand inside the water, the ashes of the ancestors which we put inside the water, they become ghosts and they catch our hand and they try to pull us with them. So that was the day when I decided not to go to rivers. But then fortunately I took up science, and someone taught me in science that, you dumb, this is not because of that ashes and the ghosts in the river. This is because of the viscosity property. This is because of the laminar flow of water. This is happening because water flows in different layers. Alag alag layer mein water is flowing, and that is why this is happening. Okay, no, I had very weird imaginations, beta. Seriously. Now let us look. Now if I drop honey, you know what is honey, beta? Yes. Yes. I'm not talking about your honeys. I'm talking about honey, the shahad. Okay. So when I drop water and when I drop honey, shahad, water will flow faster as compared to honey. This is because of viscosity. Now, viscosity is the measure of resistance to flow of liquids. इसको अगर मैं एकदम सामान्य भाषा में कहूं तो चिकनाहट जो बोलते हैं ना हम लोग, ऑयल में चिकनाहट ज्यादा होता है, घी में होता है, हनी में होता है, वाटर में कम होता है पर बहुत कम होता है. So viscosity is the measure of the opposition to the flow of the liquid. Okay. Now this is arising due to the internal friction because of the layers of the liquid internally. Internal friction. Now see, when this liquid is flowing on a fixed surface, when it is flowing on a fixed surface, now look here beta, I have a surface, this is that river का bed, river bed बोलते हैं अपन उसको, ठीक है. ये बेटा river bed मतलब river का सबसे bottom most portion, the bed, the last part where there is land, right? So you must have seen Krishna and Mahabharata all in the TV in the lockdown. So you have seen how Lord Krishna goes inside the river and dances on the head of the snake and comes out, right? So that snake was sleeping at the bed of the river. Okay, don't try it at home, beta. This is not for everyone. So when you go inside the river, at the bottommost, if you see the water particles which are touching to the surface, they are hardly moving. They are moving, but they are very, very slow. Why? Because they are facing maximum friction because of the ground, because of the river bed. Now look at the particles just above the particles which are directly touching to the surface. Those particles are flowing faster as compared to the particles which are at the bottom of the surface. The particles which are at the top, at the bottom most, जो सबसे नीचे है ना बेटा, उसको ज्यादा फ्रिक्शन लग रहा, और जो उसके जस्ट ऊपर है उसको नीचे वाले पार्टिकल्स की वजह से फ्रिक्शन हो रहा, तो वो स्लो जा रहा. फिर उसके ऊपर वाला उससे फास्ट, उसके ऊपर वाला उससे फास्ट. Similarly, the speed of the water keeps on increasing. This is called as laminar flow. If you see, upper layers are moving faster. They're moving with different velocities as compared to the bottom layer. ठीक है? Velocity is increasing distance as the distance is increasing from the layer. ठीक है? Now, uppermost layers have the greatest velocity. Why? Because they have minimum friction. Now, this type of flow, ठीक है, there is difference in velocity. It's called as laminar flow. Layer ka flows. Okay? Now, for any layer, the layer above it, ऊपर वाला जो लेयर है वो नीचे वाले लेयर को फास्ट ले जाने की कोशिश में है, बिकॉज वो खुद फास्ट में जा रहा है, और नीचे वाला लेयर जो है वो उसको स्लो ले जाने के इसमें है, बिकॉज इट इज गोइंग स्लोली. इट्स हैपनिंग. हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड दिस? Two people are holding your hand. Okay, when you were small, your mother and father, they wanted you to learn to walk, right? So what did they do? They held your hands and they asked you to walk. Now, as usual, what happened? Fathers, they walk faster, and mothers, they are looking here and there and they're walking slowly. So because they want to take care of the child, they are concentrating on the child, and the
Father is just looking ahead and walking. He just wants to complete that work. So fathers are moving faster. So because of that, the child is being pulled faster. But mother का speed slow है, तो उसकी वजह से वो child थोड़ा पीछे हो जाता है. तो उसका एक definite velocity नहीं है, वो दो लोगों के बीच में चंपी हुआ है. Similarly, नीचे वाला लेयर जो है वो स्लो स्पीड पे है, ऊपर वाला लेयर जो है वो फास्ट स्पीड पे है. तो उन दोनों के बीच में जो लेयर है, it's going to flow according to this control. I hope you all are understanding this. Yes, sir. अच्छा, ओके, सो यही है बस. विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट यही था. विस्कोसिटी इज नथिंग बट द मेजर ऑफ दिस opposition to the flow of liquids. Now, what is this concept of velocity gradient? What is this concept of velocity gradient? It is difference in velocity between any two layers of fluid. Two layers of the fluid. Difference in the velocity between any two layers of the fluid is du. D means a small change and u is representing velocity over here upon distance between the layers. Distance between the layers is dz. So velocity gradient is du by dz. What is du? The difference between the velocity of the two layers of the fluid upon the distance between the two layers. तुम्हाला Yes. हे लिहिलं का बाळांनो? लिहितोय. प्लीज लिहा. I will have my चहा. Done? No, sir. No, maybe. Once done, let me know. Message करो, okay? Everybody is chatting. Done. अरे वाह, please. अच्छा है, स्पीड पे है क्लास. Okay. Now, the force is which is maintaining the speed of the layers is directly proportional to the area, surface area, and the velocity gradient. जितना एरिया ज्यादा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, उतना ज्यादा फ्लोइंग होगा. वेलोसिटी ग्रेडियंट ज्यादा मतलब फोर्स ज्यादा. चेंज इन वेलोसिटी विथ डिस्टेंस. So we can combine these two beta. Force is directly proportional to A into du by dz. If I remove the proportionality sign, I get F is equals to eta A du by dz. Where eta is your theta is your proportionality constant and it is your coefficient of viscosity. Okay. Okay, guys. Yes, no, maybe. Yes. No. कुठलाही डाऊट असेल तर प्लीज विचारा. लाजू नका. चलो, डन. अच्छा, okay. Now
look at the SI unit of this viscosity, 1 second per square meter. अभी मतलब वो आप ईटा को एक बाजू में लेके जाओगे और सारे क्वांटिटीज को एक बाजू में रखोगे, then you'll get the unit as, because force का unit is n, right? And क्या बोलते हैं, change in speed वगैरह वो सब when we consider, it is Newton second per meter square. This is just some extra information for you guys. CGS में unit is poise. It is named after the scientist, okay, John Louis Poise. So 1 poise is 1 gram per centimeter per second, and which is 10 to the power minus 1 kilogram per meter per second. Just remember this. We will revise this again when we will be doing entrance. Guys, you written this? Yes. Yes. H. Very good. Is that Poise? अब इसका पूरा सरनेम पॉइजूले था, तो इतना बड़ा यूनिट रखने से अच्छा इसलिए इसको पहला ही वाला वर्ड ले लिया, पॉइस. Right? See, water, honey, and molten glass. Molten glass is also क्या बोलते हैं, a viscous liquid, but it is very very viscous. It is highly viscous. बहुत ज्यादा फ्रिक्शन है उसके लैमिनार फ्लो को. So if you keep this glass का window ना ऐसा ही, so many after many years na, this window becomes broader from the base and becomes thinner from the top. This is because the glass particles are flowing downwards. I think in last class I did tell you about this, right? Yes, sir. So this glass is a highly viscous liquid. See, old buildings में bottom में these glass windows increased हो जाती है. Very good. Amorphous liquid. An increase in temperature will decrease the viscosity in the liquid. See, at high temperature, they have high kinetic energy to overcome this resistance. So they can move faster. When you heat, they move faster. But as and when you keep on increasing the temperature, it moves slower and slower. Okay. Now, have you understood the chapter, guys? I remember on miracles on I'm not wrong. If I am not wrong. Wrong. हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? बॉन्डिंग तो बताया था ना आपको. रोहित, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किया था ना हमने? Are you sure? Because I remember doing hydrogen bonding. Hydrogen bonding is at least one hydrogen, nitrogen, hydrogen, oxygen, or hydrogen fluorine bond is required. Hydrogen bonding mein. Because of the high polar nature, there is internal interaction between hydrogen, between the positive atom and the negative atom, and
apart from the intermolecular क्या बोलते हैं bonds, they are also forming these interactive forces, which is your hydrogen bonding. And if not, don't worry, it's going to be covered in many of the chapters ahead. Okay. But I don't know why I remember teaching you hydrogen bonding. मैंने कुछ तो दिखाया था आपको hydrogen bonding वाला. नहीं दिखाया था. Oh my God, I'm getting old. I don't remember things. Chalo, we'll do that also. First, let us look at this. This done rate of diffusion wala. This numerical was done, beta. The rate of effusion of oxygen gas is 0.20 mole per minute at a certain temperature. Calculate. No, sir. Oh my God, she shouted in my ear. Okay. Okay. Chalo, let's do this. I have told you that the rate of effusion is inversely proportional to the molar mass. Calculate the rate of effusion of helium gas at this temperature. Chalo. Without me first solving, I want you to give it a try and give me the answer for rate of helium gas at the same temperature. I did tell you, we did discuss that this rate of effusion and the rate of diffusion is inversely proportional to the molar mass. We discussed, right? बा ये तो डिस्कस किया था. Yeah, चलो quickly solve this. Now see, diffusion. Diffusion is gas is in a box, a small hole, a gas आ रहा है. This diffusion. Square root of m1 upon m2. This is the formula which you will be putting over here, beta. ठीक है? Rate of effusion is inversely proportional to the square root of the molar mass. अब सब बोलेंगे, सब molar mass बोल के रह गया, square root कौन बताएगा? तो मैं अभी बता रहा है. It is inversely proportional to the square root of the molar mass. Okay, as the molar mass increases, the rate of effusion decreases. जितना बड़ा particle, उतना problem उसको move होने में. They will move out of the container at a slower rate. Now, if you increase the molar mass by a factor of 4, if you the molar mass by a factor of 4, how much decrease will be there in the rate, beta? Anybody want to take a wild guess? Four, 2. Manrat is telling 2. Very good. Beta, it's going to be 2 because square root mein hai na, right? If you are increasing the mass by 4, square root of whatever that number is, it will become, that rate is going to become, it is going to reduce by half, na? मतलब to the half of its value, 2 times से कम हो जाएगा because square root है. यहाँ पे if you are increasing by 4, diffusion will decrease by 2. Because they are inversely related to the square root of molar mass. So if I increase the molar mass by 9, it will decrease by 3. Simple as that. Abhi perfect squares दे रहा हूं मैं आपको. Simple as that. It will decrease by 4. Right. Now there are 2 gases with us. Helium and oxygen gas. Molar mass of helium is 4 and oxygen is 32. This we all know.
helium to O2. Molar mass is increasing by a factor of 8. ठीक है? Rate of diffusion for O2 is 0.2. You have to find it for helium. Helium is lighter, so obviously it's going to have a higher rate of diffusion. So if you go from backwards from O2 to, you have from O2 to helium, you have to multiply by square root of 8. So it's going to be 0.20 into root 8. 0.20 into root 8 should be equal to somewhere around 0.56657. Let us use the equation and get this answer. R2 upon R1 is equals to M1 upon M2. ये अगर ये डायरेक्ट क्या होता है बेटा, R2 upon R1 is equals to M2 upon M1, बट ये इनवर्स है, इसीलिए R2 upon R1 is equals to M1 upon M2. ये पता है ना सब लोग को, इनवर्स रहता तो दूसरी साइड पे अगर यहाँ पे सेकंड वाला ऊपर है तो दूसरे साइड पे पहला वाला ऊपर होगा. दिस एवरीबॉडी नोज ना इनवर्स प्रोपोर्शन का रिलेशन में. अच्छा. This equation, just put up the values and you'll get the answer. Guys, I hope you are understanding, or is it just me blabbering and you are just have put on the video and in your own la la land? कळलं ना रे. हो सर. हो तर सॉल्व करतायत ना तुम्ही सोबत? हो सर. व्हेरी गुड. किसी का माइक ऑन है बेटा, बंद कर लो प्लीज. अभी भी ऑन है. हाँ बंद हो गया. सिंपल वही चैना 0.RS2 5.2. ये जो तरीका है, दिस वे वी विल डू इट इन बोर्ड्स, इन योर कॉलेज एग्जाम्स. बट एंट्रेंस में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम लोग वो जो पहला तरीका किया था हम लोग ने इस हिसाब से करेंगे. Do this. Did you write it, beta? Write it? Yes. Okay. Want to see one more type of numerical on this and then proceed Yes. ahead? So because today I was planning to start a new topic of redox reactions. We have ample of time, don't worry. Look at this. Unknown gas has a rate of diffusion that is 2.646 times faster than nitrogen gas, N2. Determine the identity. Determine ये कौन सा गैस है. Simple. Molar mass ढूंढ लो, गैस पता चल जाएगा कौन सा है. It is given. Speed of rate is given 2.646 times. It is not given the rate is that. So R2 is 2.646 times R1. ऐसा. So molar mass निकला यूज करके तो इजी पड़ेगा. ठीक है. You have to find out molar mass of the first gas. ठीक है. तो उसको हम लोग x से substitute कर देंगे because I want to find it. Otherwise don't replace it by x, just keep it as m1. He has replaced it. So Rn2 divided by Rx. X is the unknown gas. Square root of mx upon what is the molar mass of m2? Mn2. So if you put the numbers or these suffixes in the wrong location, you get the wrong answer. You have to be very careful while writing all this. कि मैं दूसरे गैस का ऊपर रेट लिख रहा हूँ तो दूसरे उसके ऑपोजिट मोलर मास पहले गैस का आना चाहिए.
right? If N2 has rate of diffusion as 1, the rate of the unknown gas is going to be 2.646. So if you just solve this equation, you get the answer for X. समझा सबको? Or do you need an explanation, Geta? Don't hesitate in asking question. To remove the square root, I will square both the sides. 1 upon 2.646 the whole square into is equal to X upon 28. So what is X? 28 upon 2.646 the whole square, which is the molar mass of the unknown gas. जब log सीखोगे तब इसका स्क्वायर वेयर भी निकलना आ जाएगा, which is approximately तो सॉल्व करोगे तो 4 ग्राम आता है. What is the mass? किसका मास है 4 ग्राम? हीलियम का. तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे? हीलियम आएगा. ओके ओके कि नो ओके? ओके Okay. अच्छा गलत होते तुम ही लोग का. Yeah, but we did this dipole interaction, ion dipole. Zoom को लेना. First lecture. हाँ केदार, it was in the first lecture बेटा. से पहले lecture में we had done this. Shubham, your camera is on. So don't worry, we will revise. ठीक है, हम लोग we'll keep a separate thing so that this all can be repeated. Now this hydrogen bond is very much similar to dipole interaction. ठीक है, अभी look at these formulas which are given on the screen. Everyone can hear me, right? So look at this formula on the these examples on the screen. NH3 दिया है, water दिया है, hydrogen fluoride दिया है. अभी को पहला मॉलिक्यूल देखो NH3 का, NH3, right? Nitrogen is more electronegative when compared to hydrogen. बेटा electronegativity ये बताया था ना? This everybody knows what is electronegativity. The tendency to attract the shared pair of electron towards itself within the covalent bond. That पे बताया सब लोग. Yes. अच्छा, अभी nitrogen is see if you look at all these examples, इन सब के अंदर non-metals ही है, right? ए बेटा nitrogen, hydrogen, fluorine, oxygen, all are non-metals, but hydrogen is an exception. Hydrogen is an exception where you are having electropositive non-metal. Rest nitrogen, oxygen, and fluorine they are much more क्या बोलते electronegative as compared to hydrogen. So the electron pair which is shared between nitrogen and hydrogen, which is shared between oxygen and hydrogen and fluorine in the consecutive examples of ammonia, water and hydrogen fluoride, वो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर पार्शियल चार्ज आ रहा है. यहाँ पे पार्शियल डेल्टा मींस स्मॉल अमाउंट, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, राइट? अभी देखो अमोनिया का एक मॉलिक्यूल, अमोनिया का दूसरा मॉलिक्यूल. अमोनिया का एक मॉलिक्यूल में माइनस क्या बोलते पार्शियली नेगेटिव नाइट्रोजन सेंटर है और अमोनिया के दूसरे मॉलिक्यूल में पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन सेंटर है. अभी जब मैं आपको अमोनिया का एक सैंपल दूंगा, इट विल नॉट हैव ओनली वन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया.
Array, it will have thousands and thousands and lakhs of molecules, right? Because I'm going to give you a glass full of ammonia. ये बेटा उसके अंदर ऐसा मॉलिक्यूल्स आएगा ना, तो एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव पार्ट, दूसरा नाइट्रोजन का नेगेटिव, दिस नेगेटिव नाइट्रोजन इज गोइंग टू अट्रैक्ट द पॉजिटिव हाइड्रोजन ऑफ द अदर मॉलिक्यूल. This extra attraction between the molecules is called as hydrogen bonding. Now, the rules for hydrogen bonding are, this hydrogen bonding can be seen in compounds which must have at least one nitrogen to hydrogen or oxygen to hydrogen or fluorine to hydrogen bond. ठीक है, इसकी वजह से ना बॉन्ड स्ट्रेंथ और बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है एंड सोल्यूबिलिटी भी इंक्रीज हो जाता है. Was I speaking Spanish or did you understand what I just said? Rohit, is this concept clear? Others? Guys, did you understand what did I just say? Kedar? Sir. Prabhat, समझा? Okay. So, can I consider that in this chapter, states of matter, whatever we have done, theory, derivations, theorems, numericals, you all have a rough idea of what is there in this chapter, and you know, or if you can solve it, and you will not say कि नहीं भाई ये क्या होता है मेरे को पता नहीं. We have used different videos, we have used different examples, and we have interacted, we have solved. I hope you have understood this chapter. अपने पोर्शन के हिसाब से इस चैप्टर में इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ने के अपने. I totally understand the people who were new, who joined late. You have missed some parts of the chapter. Don't worry, we will definitely repeat. We'll keep a separate lecture in which we'll repeat all these things for you. Okay? Because अभी कैसा है, अभी फिर से पूरा repeat करूँगा तो other people will get bored. They should not, obviously, but they will. That's human tendency. So जिन्होंने late join किया उनको थोड़ा बहुत जो भी था part, did they understand that? And the people who are sitting here from the first lecture, have you understood it? Any doubts? Any questions? Am I connected? Yes, sir. Acha. So any doubts? No, sir. Okay. So you know when do we get doubts, beta? Doubts कब आते हैं पता है? जब हम लोग घर जाके रिवाइज करते हैं, जब हम लोग खुद से उसको एक बार पढ़ते हैं, तब अपने को डाउट आते हैं. Yes, रोहित, yes, it is way much stronger than Van der Waals forces. Van der Waals forces के मुकाबले तो ये bond काफी strong होता है. So we will get doubts when we will go through whatever is taught, when we will try to research on it. Don't go in-depth research, obviously, because that is going to be too much. But तो भी थोड़ा बहुत पढ़ाया है. Keep on revising that. If you do not understand, I'm always available. Okay, people? Cool. So are you strong enough to to commit another lesson, another chapter, another topic to me? I hope every understanding the way, the method I'm choosing to teach you guys. See, it's every teacher has a different way, but yeah, I am a bit lazy, so I don't want to write. I want to use a video. I choose videos. I assume that videos and visuals and virtuals say it is much, the concept gets much clearer because when you can actually see it in front of you. Okay. So if this is okay with everyone, we can start with a concept called as hydrogen bonding. I say not hydrogen bonding. We can start with something called as redox reactions. ठीक है? Start करें fresh topic बेटा everyone. अभी सब लोग yes करोगे क्या? Oh my God. अच्छा. So before starting the topic, I want to ask. Sir, your voice is not audible. My voice is not audible. Is it audible now? Yes, sir. Very good, beta.
So see what happens now when I'm moving the cursor, I have to move the cursor to open up new files and folders. So because of that movement, it sometimes glitches. Okay, so I will be moving the cursor now to open the new topic. So it will be possible that you will not be able to hear me for some seconds. So do not hold on, where is it? Okay, hold on. Folder में है, ठीक है. So before we begin, I want you guys to tell me what is redox reaction. Have you heard of this name, redox reaction? Konali redox reaction. Yes. Oxidation and reductions simultaneously. Oxidation and reduction simultaneously. Reaction in which both oxidation and reduction take place simultaneously. Oxidation plus reduction. Oxidation and reduction. Very good. Oxidation reduction take place simultaneously. Acha, very good. So almost everybody knows what is redox. Red ox, right? It doesn't mean a lal bell. It means reduction plus oxidation. Reduction ka red, oxidation ka hox. Acha. Before we go into reduction and oxidation, let us first something understand by what is oxidation and what is reduction. ठीक है कि ये reduction और ये oxidation क्या होता है पहले अपने को हो जानना है. ठीक है. So let me ask today. ठीक है, मैं ऐसा question करेगा तो तुम जिसको बोलेगा वही बात करना. I'm just going through the chat and जो भी random name मुझे दिख रहा है मैं उसको उठा ले रहा हूँ बेटा. There is no personal grudge against anyone. ठीक है, ऐसा मत सोचना ये मेरे से नफरत करता है जो मेरा नाम लिया. आस्था राठौड़. Yes, sir. I bet. अच्छा आप ही हो, आपका आवाज इतना जोर से आता है. चलो कोई बात नहीं. ये मुझे बताओ बेटा. What do you mean by oxidation? Oxidation बता जो आपने 10th में 9th में जहाँ पे भी पढ़ा होगा कभी. The reaction in which hydrogen is removed. Removal of hydrogen. Reaction in which hydrogen is removed. Excellent, very good. Can you give me an alternative explanation for oxidation? मतलब एक दूसरा explanation. This is absolutely correct. You whatever you are saying is correct. आस्था ने एकदम बरोबर बोला कि removal of hydrogen is oxidation. Can I say Astha? Addition of oxygen. Is also very good. Addition of oxygen. This should be the first definition, beta. Addition of oxygen is oxidation. Alternatively, removal of hydrogen is oxidation. अच्छा. Yeah. अभी कौन बोलेगा? आरजू. आरजू की अभी बेटा. Yes, sir. Very good. आरजू बेटा आप मुझे बताएं रिडक्शन क्या होगा? Reduction is Opposite of oxidation. gaining of hydrogen and losing of oxygen. Very good. It is gaining of hydrogen, addition of hydrogen or removal of oxygen. तो जो भी आप ऑक्सीडेशन के लिए बोलोगे उसका उल्टा रिडक्शन में हो जाएगा. So अभी तक till now we all have oxidation and reduction in these ways. ठीक है, सब लोग को ये पता है, right बेटा? Everybody in this classroom is aware of the definition which we just said, right? Oxidation and reduction का. ऑक्सीजन ऐड हुआ तो उसको ऑक्सीडेशन बोलते. अगर हाइड्रोजन ऐड हुआ तो उसको रिडक्शन बोलते. अगर हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो उसको ऑक्सीडेशन बोलते. अगर ऑक्सीजन रिमूव हुआ तो उसको रिडक्शन बोलते. अच्छा, इसके अलावा कोई और डेफिनेशन किसी ने सीखी है ऑक्सीडेशन या रिडक्शन की खुद से? रोहित ने सीखी है. पीयूष ने नहीं सीखी है. मयूरेश ने यस सीखी है. मिताली ने सीखी है. ओके. So have you ever heard of something called as loss of electrons and gain of electrons?
So oxidation can also be defined as the loss of electrons. इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो वो एटम मॉलिक्यूल आयन इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, ठीक है बेटा। और अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, तो दैट क्या बोलते हैं, एटम मॉलिक्यूल आयन इज अंडरगोइंग रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, ठीक है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ा, मतलब रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ा, मतलब ऑक्सीडेशन, ठीक है। जिन लोगों को नहीं पता था अभी पता चला। इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे वी विल डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। Apart from this, has anybody studied any other method? ये तो हो गया addition of oxygen, removal of hydrogen, removal of electrons. This is oxidation. Addition of hydrogen, removal of oxygen, addition of electrons. This is reduction. ये तीन definitions each हो गए of oxidation and reduction. इसके अलावा किसी ने और कोई definition सीखी है? नहीं। अच्छा, fine. Okay. Now, before moving ahead, are we all aware of something called as electropositive and electronegative elements? Very good. तो आप मुझे बताएं, आप सभी मुझे बताएं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है और इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? रुको, टाइप मत करना। शुभम, शुभम आप मेरे को बताओ बेटा। हाँ सर। हाँ बेटा शुभम, बेटा हाँ। शुभम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से हु इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड हु इज इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। वेरी गुड। और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव। Excellent. Let us rethink over this beta, whether this is correct or this is wrong. Okay. हाइड्रोजन का आयन पता है तुमको? आयन, हाइड्रोजन लूजेस इलेक्ट्रॉन और गेन इलेक्ट्रॉन्स बेटा, आयनिक बॉन्ड बनाते वक्त। लूजेस, ठीक है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन करता है कि लूज करता है बॉन्ड बनाते वक्त? गेन करता है, बिकॉज उसको सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, राइट बेटा? अच्छा, अभी बेटा जो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हुआ कि इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ? इलेक्ट्रोनेगेटिव से। एक्सीलेंट, वेरी गुड। और जो एलिमेंट, जो एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हुआ कि इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। Excellent, right? So now I will repeat my question. Okay, if you are not comfortable you can mute the mic beta, I totally understand. ठीक है? Yes, so अभी hydrogen is losing electrons, oxygen is gaining electrons, so oxygen is electronegative and hydrogen is electropositive. It was आपने जो बोला था वो opposite बोला था सुशांत। It's okay, nervousness में हो जाता है, don't be nervous. I am the last teacher in this universe जिसके सामने तुमको नर्वस होना पड़ेगा, ठीक है? स्क्रीन दिख रहा है सबको? Yes sir. Okay. So so did you understand beta Shubham what is electropositive and what is electronegative? Yes, So yes, oxygen is electronegative and hydrogen is electropositive. Everybody agrees to this? Yes sir. अच्छा, वेरी गुड, फाइन। सो अभी मेरे को बताओ ऑक्सीडेशन का आपने डेफिनेशन में क्या बोला था? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो क्या होता? ऑक्सीडेशन होता। अभी किसी कंपाउंड में सपोज ऑक्सीजन ऐड नहीं हुआ, क्लोरीन ऐड हुआ, क्लोरीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है? Positive. इलेक्ट्रोनेगेटिव। Chlorine is electronegative beta because chlorine accepts electron, right? जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, राइट बेटा? क्लोरीन को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, राइट? ओके बेटा, डाउट्स क्लियर हुए? Am I going too fast?
So the other definition of oxidation goes like this: either the addition of oxygen or any other electronegative atom is called as oxidation. और reduction क्या हो जाएगा? Either the loss of hydrogen or any other electropositive atom will be reduction. देख बेटा, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा तो रिडक्शन हो रही, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा तो ऑक्सीडेशन हो रही, बट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड होगा तो ऑक्सीडेशन होगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट रिमूव होगा तो रिडक्शन होगा. व्हाई? बिकॉज हाइड्रोजन इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रो नेगेटिव. बेटा, एटम and electron are two different things altogether. Electron is a part of the atom. ठीक है? Electron add होना and electronegative element add होना, these are two very different things. So don't get confused between this कि भाई इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, बट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एक एटम है, एक एलिमेंट है, और इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन है. इट इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल. सगळ्यांना हा डिफरन्स कळला का रे? हो सर. Everybody, concept clear? If anybody has a question, please ask me, beta. Don't feel shy. Don't be shy, my honey. सबको सब कुछ समझा. So let us start with this chapter. Now, what can you see in this in front of you? Let us first go through the classical concept of ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन और रेडॉक्स रिएक्शंस. ठीक है, आपके सबके सामने आयरन बेंच दिख रहा है सबको? ठीक है बेटा, ये दिखने में वो जो बीच वाला बैठने वाला पार्ट है वो दिखने में वुडन लग रहा है, बट इट्स नॉट वुडन, इट इज आयरन. ठीक है, सो ये पूरा आयरन का बेंच है और जिसपे आप लोग बैठ करके पार्क में जाके पढ़ाई करते हो. आई एम अज्यूमिंग कि पढ़ाई करते हो, राइट? तो अभी जब भी बारिश होती है तभी इन बेंचेस पे कोई नहीं बैठता है और एकदम धड़ाधड़ बारिश हो रही है. आयन पे कुछ फर्क पड़ेगा बेटा बारिश का? Yes. Yes. What will be the effect of water or rain on iron? Rusting. Very good. Corrosion. Rusting. Very good. Iron rusts in the presence of moisture and water, right? Moisture and water. Did I say right? Am I correct, beta? I'm correct, Kedar. I'm correct. Yes sir. Yes, But sir. मतलब जो भी मैं बोलता हूँ वो सही होता है, मतलब तुम लोग सुन नहीं रहे हो. I said iron is rusting in the presence of moisture and water. ए बेटा, moisture and water is one and the same thing. Moisture and oxygen बोलना चाहिए था मुझे, मैंने moisture and water बोला. सब लोग बोले कोई बात नहीं, आप हमारे देवता हो, आप जो बोलोगे वो सही होगा. बाहुबली, मेरा वचन ही है शासन. ऐसा नहीं है रे बेटा, कुछ गलत रहेगा तो बोलो, सुनो, बी अलर्ट. ओके, I suppose सब लोग were not paying attention and everybody was imagining कि इस बेंच पे हम किसके साथ बैठेंगे. ऐसा नहीं है बेटा, ये बेंच गंदा होने वाला देर में, इस पे रस्ट लगने वाला है because continuously बारिश गिर रहा है उसके ऊपर, right? So iron rusts in the presence of oxygen and moisture or water. So अभी this is a chemical reaction, right? This is the effect of water and oxygen on iron. तो ऐसा बारिश हो रहा है, साइक्लोन आ रहे हैं जा रहे हैं. ठीक है, वो बेचारा बेंच उधर ही रखा है, कोई उसको साफ नहीं कर रहा है, कोई उसको पेंट नहीं कर रहा है. तो क्या हुआ, ऐसा रस्ट हो गया. अभी देखो कैसा चमकता धमकता बेंच था और अभी देखो कैसा अपना रस्ट हो गया है पूरा, राइट? बट वी आर तो सो लेजी, इफ वी गो फॉर जॉगिंग हम तो रस्ट हुए आयरन बेंच पे ही बैठ जाएंगे. थक गया, खाना जितना खाया था वो क्यों बचाऊं, इतनी मेहनत से खाया था, राइट? सो this iron bench going to rust. It rusts. Now this rust is a chemical reaction, the formation of rust. Iron, what do we say, converting into iron oxide, Fe converting into Fe2O3. It is a chemical reaction. Everybody knows this, right? Yes. At the rusting of iron is a electrochemical process that begins with the transfer of electrons from iron to oxygen. आयरन से ऑक्सीजन जाना है,
Now this redox reaction is a electrochemical reaction where reduction and oxidation they occur simultaneously. Redox is the short form of red and ox, reduction and oxidation. जैसा हम लोग करते हैं talk to you later, right? SS screenshot, DP display picture, right बेटा? ऐसा redox का वो लोग ने छोटा बनाया redox. So let us look at other different definitions which we have already discussed of redox reactions. क्लासिकल कॉन्सेप्ट बोले तो जब ये एकदम बिगिनिंग में redox का कॉन्सेप्ट डेवलप किया हम लोग ने बोले तो वो महान साइंटिस्ट ने डेवलप किया था. Oxidation is defined as addition of oxygen or any electronegative element to a substance, and it is also defined as removal of hydrogen or a electropositive element from a substance. सगळ्यांनी असा चार्ट बनवून घ्या ना प्लीज, आपल्याला खूप सोपं होईल वाचायला नंतर. झालं सर वेट. ओके ताई, वेट करतो मी. Guys, very good, very good. Done, sir. Very good. आता reduction is opposite of oxidation. ये भी हमने discuss किया. Removal of oxygen or any electronegative element from a substance, or addition of hydrogen or electropositive element to a substance. ये भी लिख लो बच्चे. और वो पहला वाला जो लिखा था ना उसके नीचे थोड़ी जगह छोड़ देना ताकि we can add वो इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीडेशन नंबर वाला कॉन्सेप्ट. अभी 11th में हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से रिलेटेड. दैट विल बी रिलेटेड टू ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट. आपने शायद ये सुना होगा पहले, बट इसको हमने इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही मजेदार चैप्टर है, जहाँ पे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू फाइंड आउट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड, इन अ रिएक्शन. How to find out किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है by looking at the reaction, and so many interesting concepts. So it is more of a solving and less of theory, but it is very interesting. बहुत मजा आता है चैप्टर पढ़ने में. I hope तुम लोग को मजा आए. नहीं भी आए तो क्या कर सकते हो बेटा, पढ़ना तो पड़ेगा ही. लिख लिया बेटा सबने? Has everybody written this? Very good. So like this, ठीक है. Reactions can be illustrated like this. ऐसा साथ में भी लिखते तो भी चलता, बट तुम लोगों ने अकेले अकेले लिख लिया, कोई बात नहीं. अल्टीमेटली एम क्या है, पढ़ने का है. So redox reaction is happening because of the combination of oxidation and reduction. Let us look at some examples of redox reactions now. Okay. Look, what is this beta? Salt. It is salt? No, it is perfume. Attar. Oh my god. It's not attar, it is salt only beta. Sodium chloride. अंदर देखो white color का solid दिख रहा है ना? इस आपको screen दिख रहा है ना properly? Yes. Yeah, I was just joking. It is definitely sodium chloride and salt. Now, you know, sodium chloride is formed as a result of a redox reaction between sodium and chlorine. Obviously, you must be knowing.
सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन दे रहा, सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकल रहा तो उसका क्या हो रहा बेटा, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा, और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रही तो उसका क्या हो रहा, उसका रिडक्शन हो रहा। एक ही रिएक्शन में एक इलेक्ट्रॉन दे रहा, दूसरी इलेक्ट्रॉन ले रही, तो दोनों का एक साथ, एक का ऑक्सीडेशन हो रहा, दूसरे का रिडक्शन हो रहा, तो अल्टीमेटली क्या हो रही, रिडॉक्स रिएक्शन हो रही। This is what I explained. Now let us look in the traditional, in the पहले का जमाने का language. Sodium plus chlorine is giving me sodium chloride. This what I said was according to the electron transfer. अभी यहाँ पे देखो, सोडियम के अंदर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है। Sharon, can you hear me, beta? Sharon Shaji? Yes, sir. Yes, beta, Sharon. Sharon, sodium is electropositive, beta? Yes, sir. Very good, beta. And chlorine is electronegative? Yes. Very good. Chlorine is being added to sodium, right? Electronegative is being added to sodium. तो सोडियम का क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन? Oxidation. Excellent. Sodium is being added to chlorine. Sodium is electropositive. Electropositive is being added to chlorine. तो क्लोरीन का क्या हो रहा है? Reduction. Very good. तो एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रहा है. So can we say that this is a redox reaction? Yes. Very good. ठीक है, simultaneously this is happening. This way. तो ये अपना ट्रेडिशनल डेफिनेशन से हुआ. So in this redox reaction, oxidation and reduction occur simultaneously. This is proving that. Now, what is this beta? Fire, hog. This is fire beta. Fire को थोड़ा sophisticated chemical language में हम लोग बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, combustion. Have you heard of this word combustion beta? Combustion. Yeah, it is combustion. Very good beta. So combustion, what is combustion? Combustion means burning, right? Now this burning, this combustion, this also is an example of a redox reaction. Let's see how combustion is an example of a redox reaction. This is your favorite combustion reaction over here. CH4 plus 2O2 will give me CO2 plus 2H2O. भाई मैंने ना ये 9th standard से जो बाहर किया आज तक बोला नहीं हूँ मैं. ये मेरा पहला combustion reaction था which I studied 9th standard. I remember 3 o'clock in the morning I was reading the different balancing of reactions for 9th standard exam, and my mother had given me tea at that point of time. This was the reaction which I was learning. I totally went into past. I could imagine the place where I was sitting and learning this. So I will never ever forget this reaction in my life. So combustion reaction का best example is the burning of methane. Methane को जब अपन burn करें, combustion will always occur in the presence of oxygen. ठीक है? CH4 plus 2O2 will give me CO2 plus 2H2O. Before we get the example, let me किसके ऊपर बॉम्ब फोड़ूं, किसका नाम लूं? चौधरी तो भाई लेक्चर में है कि नहीं? प्रथम चौधरी. हाँ हेलो. हाँ बेटा, आप हो लेक्चर बेटा? हाँ. वेरी गुड बेटा, ऐसे ही रहो लेक्चर में. मुझे बताएं, नो कंपल्शन, डोंट गेट नर्वस, ठीक है? एकदम रिलैक्स करो बच्चे. यहाँ मेरे को बताओ, CH4 मतलब मीथेन is reacting with oxygen to give me carbon dioxide and water. यहाँ पे बेटा किसका रिडक्शन हो रहा है और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, आप मेरे को बता सकते हो? Don't take pressure, just observe it, ठीक है? And let me know. आपकी सहूलियत के लिए एरोस बनाए हुए हैं बेटा. आई एम अगेन रिपीटिंग, डोंट बी स्कैर्ड एट ऑल. जरा भी नहीं डरेंगे आप.
कोई बात नहीं बेटा, रिलैक्स, चिल। कौन बताएगा? अच्छा, when I asked Sharon, it was Sharon Saji or Sharon Verghese. There are two Sharons in this class. Okay, cool. Piyush Dokle. येस सर. बडा तू मला सांगशील का याच्यात कोणाचा ऑक्सिडेशन होत आहे आणि कोणाचा रिडक्शन होत आहे? I hope everybody understands Marathi, huh? येस येस. If you don't, please let me know. Yeah, Piyush, can you help me to know किसका ऑक्सीडेशन हुआ एंड किसका रिडक्शन हुआ बेटा? यस सर. ऑक्सीजन हाँ का ऑक्सीडेशन हुआ और ओए होए. ओके ओके. एंड CH4 का रिडक्शन हुआ. क्यों बेटा, ऐसा क्यों बोला आपने? ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव. वो हाइड्रोजन से ऐड हुआ. ओके. तो का देखो बेटा, किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन हुआ, वी हैव टू चेक फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड. तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, मेरा रिएक्टेंट्स है CH4 और ऑक्सीजन. CH4 और ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच में किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन हुआ, ये मुझे बताना है. लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे मेरा प्रोडक्ट्स है, उसके अंदर कुछ ऐड होकर के वो प्रोडक्ट बना है, राइट? तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो दो रिएक्टेंट्स है उनको देखो और उनका ट्रांसफॉर्मेशन देखो. वो एरो बनाया हुआ है आपके लिए, उनका ट्रांसफॉर्मेशन देखो कि भाई किसका ऑक्सीडेशन हो गई और किसका रिडक्शन हो गई. You have to use classical definitions: addition of oxygen, removal of hydrogen, addition of hydrogen, removal of oxygen, electropositive element, electronegative element. इनमें से कोई भी definition use करके आपको ये समझाना है कि किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन होगा. Let me ask, आप में से कोई भी वॉलंटियर करना चाहेगा बेटा, rather than me taking out your names? Anybody would like to try this? This is actually a easier one, huh? Sir, Who is this beta? Astha. Again? Yeah. नहीं, let us give chance to Kedar. Kedar is raising his hand. Okay beta? Okay. Hi Sir. Kedar. बोल बेटा, बोलो. Left hand side oxidation because oxygen is adding, and No. Darling, understand. Left hand side पे क्या है? I have two reactants, CH4 and oxygen. Okay. Yes. CH4 का क्या हुआ है, ऑक्सीजन का क्या हुआ है, ऐसा आपको मुझे बताना है. CH4 को ऑक्सीजन का एक एलिमेंट लेके CO2 बना है. हाँ. और HO से रिएक्ट करके H2O बना है. ओके. तो CH4 का क्या हुआ बेटा? CH4 का हुआ है CO2. हाँ, तो हाँ, CH4 का CO2 बना, मतलब this compound got converted to CO2. तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन हुआ? ऑक्सीडेशन. वेरी गुड. क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ है. और एक्सेलेंट. CH4 में से यस बेटा, CH4 में से CH4 ने H लूज किया और ऑक्सीजन ऐड किया. लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन. Whereas O2 के अंदर क्या ऐड हो गया बेटा? हाइड्रोजन ऐड हो गया, मतलब क्या हो गया उसका? रिडक्शन. यस. Oh my God! Did everybody understand this? Methane Yes. got converted to carbon dioxide. Methane lost hydrogen and oxygen was added. तो इसका क्या हुआ बेटा? इसका ऑक्सीडेशन हुआ. ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन वाज इन एलिमेंटल फॉर्म, उसके अंदर हाइड्रोजन ऐड हो गया, मतलब उसका क्या हो गया? रिडक्शन हो गया. एक ही रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हुआ, मतलब दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन. हो सर. पक्का ना की असंच हो सर म्हणताय तुम्ही लोक? अरे सर मी Okay, I get that you understood it. Very good beta, excellent. Hello, everybody understood? Let us move. Anybody any questions up till now? Okay, good. I'm happy. ठीक है.
and oxygen is required for combustion. Methane is reacting with oxygen to give carbon dioxide and water. Now in this reaction, carbon is oxidized because of removal of hydrogen, and simultaneously oxygen is reduced due to addition of hydrogen. Simple as that. Look at this formal example. Between copper oxide and copper sulfide. दो ठो reactions है. Copper oxide is reacting with copper sulfide to give me copper and sulfur dioxide. Did you see the answer or should I ask you? अगर आंसर देख लिया है तो नो. आंसर देख लिया क्या ऑलरेडी दूसरे स्लाइड पे जब गया था? आई थिंक नहीं देखा. Let me check. नहीं देखा. ओके. चलो यहाँ पे कौन बताएगा किस रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन हुआ है और किस रिएक्शन का रिडक्शन हुआ है? Copper oxide is reacting with copper sulfide to give me copper and sulfur dioxide. तो किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन हुआ on the basis of old definitions? कौन मुझे बताएगा? Sir. CO reduction. hold on. नाम बताओ पहले अपना बेटा. हाँ बेटा कौन बोल रहा था? सही. कौन था? Unknown. Who was he? बेटा बोलो. तुम बोलो ना आंसर. I have no idea. No problem in you giving the answer. Hello. I think he has mic problems. Sir, may I? Piyush wants to say the answer. Sahi, I'll give this answer to Piyush. ठीक है? Then new students let them answer, beta. Okay, Yes, sir. Piyush. Yes, Piyush, beta. Try. It's okay. बताओ बेटा, Piyush. तो कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है और कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है और कॉपर सल्फाइड का ऑक्सीडेशन. Excellent. Is he right? Yes, sir. Yes. अच्छा. So why are you right, Piyush? Just give me explanation. चालेल. Answer correct है. Oxygen is removed from copper. Excellent. In Copper copper oxide oxide is losing oxygen. Removal of oxygen is reduction, and copper sulfide में sulfur is gaining oxygen. So addition of oxygen is oxidation. Yes. Very good. Right? Oxygen is removed from copper oxide. And copper is also removed. Look at these examples. Magnesium plus oxygen is giving me magnesium oxide. This is normal oxidation. Magnesium and chlorine give me magnesium chloride. Addition of electronegative element, it means oxidation. Again, this is example of oxidation. Third example, removal of hydrogen. Look at the fourth equation. Potassium ferrocyanide reacts with hydrogen peroxide. Oxidation is occurring because of the removals of electropositive element from potassium ferrocyanide. Potassium ferrocyanide में K4 है, उसमें से K निकला, electropositive element निकला, मतलब क्या हुआ? Oxidation हुआ. Guys, classical concept के हिसाब से every type का definition of oxidation. Addition of oxygen, first example. Addition of electronegative element, second example. Removal of hydrogen, third example. Removal of electropositive element, fourth example. All the examples, एक example each for all the definitions. Have you understood?
Have you written it down for your reference so that you can study it later? लिहिलं का सगळ्यांनी? जर रिएक्शन्स लिहून झाल्या असेल तर मला सांगा, तर मी पुढे जातो. बड़ी फटाफट लिखते हो, सब स्क्रीनशॉट ले रहे हो क्या? तो इतनी जल्दी जल्दी रिएक्शंस लिख लिया? चलो गुड. Now let us see examples according to the classical definition of reduction. First definition is removal of, very good beta, removal of oxygen. Mercuric oxide on heating gives mercury and oxygen. Decomposition reaction है यहाँ पे, removal of oxygen. Ferric chloride reacting with hydrogen, electronegative element chlorine will be removed and ferrous chloride will be formed. This is again removal of electronegative element. Third wala, addition of hydrogen. By adding hydrogen to ethene, we get ethane. And in the last example, mercuric chloride and stannous chloride. With stannic chloride, it gives me mercurous chloride. Hg is a electropositive element. ठीक है? G is an electropositive element, वो उसके अंदर add हो रहा है. According to this classical concept, these are the examples and definitions of reduction. सबने लिख लिया बेटा? Forget about लिख लिया, सब कुछ समझा. इन examples में अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछो बेटा, प्लीज. अगर आपको एग्जाम्पल समझ में नहीं आ रहा कि भाई यहाँ पे रिडक्शन कैसे हुआ, वहां पे ऑक्सीडेशन कैसे हुआ, तो आप प्लीज पूछें. सर. हाँ बेटा. थर्ड रिएक्शन किसका? इसका. यस. हाँ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. इथीन के अंदर मैंने हाइड्रोजन ऐड किया. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज व्हाट बेटा? रिडक्शन, राइट? तो वहां पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, इसलिए रिडक्शन हुआ है. यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होके मेरे को इथेन मिल जाएगा ना? हाँ, यस. वेरी गुड सर. फोर्थ वाला अच्छा. फोर्थ वाला इज मर्क्यूरी क्लोराइड विद स्टैनिक क्लोराइड. अभी मर्क्यूरी क्लोराइड व्हेन रिएक्टिंग विद स्टैनिक क्लोराइड इज गिविंग मर्क्यूरस क्लोराइड एंड स्टैनस क्लोराइड. अभी देखो बेटा, पहला वाला फॉर्मूला क्या है? HgCl2. मर्क्यूरी क्या है? मेटल है. मेटल्स क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है. अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड होता है तो अपन उसको क्या बोलते हैं बेटा? रिडक्शन बोलते हैं, राइट? आप प्रोडक्ट साइड में देखो, HgCl2 को क्या हो गया है? Hg2Cl2. मतलब Cl2 तो उतना ही है, बट एक और मर्क्यूरी ऐड हो गया. मर्क्यूरी मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऐड हो गया मतलब क्या हो गया? रिडक्शन हो गया. कर लो हे बाळांनो, कळलं? यस. हो सर. स्नेहाला नाही कळलं. स्नेहा बिल्डर क्या नहीं समझा बेटा? अच्छा सॉरी, इट्स नॉट नो, इट इज हो. आई एम सो सॉरी, मैं चश्मा पहन के नहीं बैठा हूं. So I'm assuming everybody is thorough with their definitions of oxidation and reduction now. All possible oxidation or reduction का definitions हमने देख लिया है according to classical concept, according to old concept. Addition, removal of oxygen, addition, removal of hydrogen, addition, removal of electropositive element, addition, removal of electronegative element. Very good. आता बघा, ट्रान्सफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सोडियमचा एक इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर होतो क्लोरीन मध्ये. सोडियम last shell single electron is transferred to chlorine. Now sodium atom and chloride atom is going to transform into ions, sodium ion and chlorine ion.
तो यहाँ पे सोडियम क्या हुआ, यहाँ पे सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ, क्लोरीन का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। डेफिनेशन, this is the electronic concept beta, this is the electronic concept. Oxidation is defined as the loss of electrons. So in a chemical reaction, during the formation of product from the reactants, loss of electrons results in the increase in positive charge or decrease in negative charge. ये दोनों का मतलब एक ही है ना बेटा, right? Loss of electron will increase positive charge or decrease negative charge. Isn't it the same thing? Isn't it the same thing beta, right? Increase in positive charge and decrease in negative charge. वाला definition भी लिख लो बेटा. Oxidation is loss of electrons. It can also be, oxidation can also be termed as increase in positive charge or decrease in negative charge. लिख लिया सबने? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसको दोबारा मत लिखना, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट का डेफिनेशन लिखें आप. चलो गुड, लिख लिया. Now reduction is going to be totally opposite of it. It's going to be reduction of electrons. Right? क्लासिकल तो हमने पढ़ा है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट क्या होगा? It is gain of electrons. So what is this gain of electron going to do? It is going to decrease in positive charge or increase in negative charge of the species. जो भी ऑक्सीडेशन के बारे में लिखेंगे उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट इज गोइंग टू बी फॉर रिडक्शन. ये लिख लिया सबने? यस. अच्छा अच्छा. यूज अच्छा. So मोटा मोटी according to the electronic concept, loss of electrons is oxidation and gain of electrons is reduction. जैसे हमने classical concept देखा था, the definition of redox reaction as per classical concept, this is definition of redox reaction as per electronic concept. Now you can remember it like this by remembering oil rig. ठीक है? Oxidation is loss of electrons. So O is oxidation, I is, L is loss, R is reduction, I is, and gain is, and G is gain of electrons. So oil is oxidation, rig is reduction. Oil means oxidation is loss of electrons, rig means reduction is gain of electrons. समझे क्या? रिपीट सर. है? रिपीट. देखो ना सामने, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उसका शॉर्ट फॉर्म क्या डाला हमने? ऑयल. रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, का शॉर्ट फॉर्म क्या डाल दिया? रिग. सो ऑयल मींस ऑक्सीडेशन, रिग मींस रिडक्शन. हाँ बेटा बोलो. इसके लास्ट का स्लाइड था वो एक बार रिपीट करो ना, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी. कोई बात नहीं बेटा. बेटा लास्ट का स्लाइड यही था बच्ची. कौन थी ये बच्ची? हाँ बेटा ये देखो, discussing electronic concept, oxidation will be loss of electrons, reduction is going to be gain of electrons. ये हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस कर लिया था. So loss of electron मतलब क्या? It is either increasing positive charge or decreasing the negative charge. Both are one and the same thing. Active and passive voice. Decrease in positive charge, increase in negative charge is gain of electrons, which is reduction. Okay beta? Yes sir. अच्छा.
the short form to remember it is pig and oil. Oxidation is loss of electrons and reduction is gain of electrons. Let us baga the formation of sodium chloride from sodium and chlorine. Sodium is losing an electron and is forming Na plus ion, while chlorine is gaining an electron and forming Cl minus ion. Right? Now, if you look at the reaction, according to the electronic concept, sodium is oxidized and chlorine is reduced. Reaction देखो बेटा, ऐसे reactions लिखेंगे हम लोग आगे जाकर के अभी इस चैप्टर में काफी सारे. It's going to be very easy बेटा. अगर आप step by step follow करो ना चीजों को, this chapter is going to be the most scoring and the easiest chapter. लेकिन आप अगर steps भूल गए, अगर आप बीच में concept भूल गए तो थोड़ा सा tough जाएगा. तो इसीलिए सब लेक्चर में प्रेजेंट रहो and follow this chapter. It's going to be very interesting. It is less of theory and more of solving. ये रिएक्शन लिखा सबने फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड का, जैसे लिखा है सामने आपके, वो डायग्राम मत बनाओ बट वो रिएक्शन लिखो. रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट. वेरी गुड. ठीक है. Now what can I do? I can add these oxidation half reaction and reduction half reactions. So when I add these, now look at this. Sodium का क्या हुआ? It got converted to Na plus by losing 2 electrons, and chlorine accepted electrons and became chloride ion. These are the two half reactions of that one reaction which was given. So the first one is called as oxidation half reaction, and the next one is called as the reduction half reaction. Okay, समझा? वो एक ही रिएक्शन है जिसको मैंने दो पार्ट्स में तोड़ दिया है. जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है उसको अलग से लिखा, जिसका रिडक्शन हुआ है उसको अलग से लिखा. तो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, जिसका रिडक्शन हुआ है दैट इज योर रिडक्शन हाफ रिएक्शन. कळतंय का रे? आता या दोघांना मी ऍड केलं तर ऑपोजिट साइडचे दो जे सेम क्वांटिटी आहेत ते कॅन्सल होणार. जो ऑपोजिट साइड पे सेम क्वांटिटी है वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा. और जब आप ऐड करोगे, ये you will get the same reaction again. Sir, how I now lose electron? Rohit, I quite didn't understand the question, beta. What are you asking? Sir, how sodium lose electrons? It is in solid state. Atomic level के बात करते हैं बेटा, and they are look at their atomic structure. Now look at the valency. It only has one electron. It will easily lose that electron to form an octet and become stable. And when I say solid state, I'm considering about the atomic level reactions जो मैं लिख रहा हूँ. Did you get it better? What am I saying? Yes, sir. Okay. तो ये दो half reactions को मैं कभी भी add करूँगा, I will get my complete redox reaction. So whenever I add two half reactions, I will get my complete redox reaction. ये लिखा सबने? चलो ये लिख लिया. चलो आगे का should we continue in the next lecture बेटा? Time is up and I gotta go.